रेडी। देखो एक सिंपल सा चार्ट है, आप एक बार इसको देख लेंगे। एक्यूरेसी, जो आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आता है ना, जब आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो चेक करने के लिए, आप डिक्टेशन लिखने के बाद में अगर आप जस्ट उसको वॉच करते हो तो उसमें इतना सा इंप्रूवमेंट आता है एक्यूरेसी के अंदर, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आता। अगर आप उसको रीड करते हो कि क्या गलतियां हैं, फाइंड आउट करते हो कि ये स्मॉल की गलतियां हैं, कैपिटल की गलतियां हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये मिसरीड हुआ है, तो आपका इंप्रूवमेंट का लेवल एक्यूरेसी में इतना पहुंचता है। लेकिन अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हो तो आप एक्यूरेसी के लगभग 99+ कंटेंट को कन्वर्ट कर ले जाते हो। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक्यूरेसी ही फोकस होती है। एक और चीज़ होती है कि एग्ज़ाम में क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। हम ना बहुत सारा कंटेंट करने की कोशिश करते हैं कि इससे भी गो थ्रू हो जाए, उससे भी गो थ्रू हो जाए। ये कंटेंट ना डिक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होती। आप ना साउंड सिस्टम पे लिखते हो, और साउंड सिस्टम ना कंटेंट बदलने से नहीं बदलता, वो ऑलरेडी आपका बन चुका है, आप बेस बना चुके हो। स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए कंटेंट में की बजाय ना एक्यूरेसी पे होनी चाहिए। आप जो टाइप कर रहे हो, आप कितना भी कंटेंट कवर कर लोगे तो उससे कुछ कवर नहीं होता। आप जो कर रहे हो ना उसको इफेक्टिवली करने से होगा। अगर आपका लेवल फिलहाल एक्यूरेसी का 78% है और अगर आप इसमें जो है 7 से 8% का इंप्रूवमेंट कर लेते हो, तुम फाइट में आ जाते हो, सिलेक्शंस के पास पहुंच जाते हो। लेकिन अगर इस पर फोकस ना करके आप नए नए तरह के कंटेंट करते चले जाते हो तो आपकी स्ट्रेटजी एकदम गलत होती है। एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं करते। स्टेनो स्किल के केस में आपको जो कंटेंट आप कर चुके हो, अच्छी बात है, मैं उसको रिपीट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कंटेंट को लेके प्रेशर मत लेना कि बहुत सारा कंटेंट करने से कुछ अच्छा। आपका ऑब्जेक्टिव है जो तुम लिख रहे हो वो अच्छे से उसको टाइप कर पाओ। देखो, जब हम कंटेंट बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ या मान लो जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी धीरे धीरे जो है उसके हिसाब से घटता चला जाता है। लेकिन अगर आप कंटेंट पे काम ना करके एक्यूरेसी पे काम करोगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एज इट इज बनी रहती है और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाती है। मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। आपके पास एक पेज है, उसी पेज में आपका फाइनल सिलेक्शन छिपा हुआ है। जब आप चेक करते हो, एक तो आदत बनाओ कि मैं रोज कंटेंट जो डिक्टेशन लिखूँ ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ डिक्टेशन कर रहा हूँ, चाहे वो 100 पे बोल रहा हूँ चाहे 80 पे बोल रहा हूँ, आपका पर्पज होना चाहिए कि आप उसको जाके फेस करो, टाइप करो। आप अपने कंफर्टेबल जोन को सर्च आउट मत करो कि मैं जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो टाइप करूंगा, क्योंकि चीज़ें चेंज करने का समय है। फिलहाल तो ये होना चाहिए कि आपको जो बोल दिया गया, अगर आपका सी ग्रेड का टारगेट है, आप उठो, टाइप करो। टाइप करने के बाद में उसने जो है प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद में आप एनालाइज करो कि क्या कंटेंट आपका टाइम पे टाइप हो गया था। सबसे पहली चीज़ है कि आपका पूरा कंटेंट टाइप होना चाहिए। अगर आपका पूरा कंटेंट टाइप नहीं हो रहा, आपकी अगर टाइपिंग स्पीड में कमी है तो आप उस पर फोकस करें। क्योंकि स्टेनो लिखना एक अलग बात है, स्टेनो को टाइप होना वो बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉपी तभी चेक हो पाएगी जब आप कंटेंट वहाँ पर टाइप कर पाएंगे। अगर आपकी 1-2 लाइन छूट रही है तो आप, अभी समय है, 5-7 दिन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड आता है, आपने टाइप करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लिया, अब उसको एनालाइज करना कि आपकी एक्यूरेसी लेवल कहाँ पे है। अगर 90 है, अच्छी बात है, आप सिलेक्शन पे हो, लेकिन फिर भी उन माइनर मिस्टेक को देख सकते हो। एक कॉमन चीज़ ये आपको जो बताई जाती है, अगर आपने 5 टाइप कर दिया, FIVE, और आपने न्यूमेरिकल 5 टाइप कर दिया, दोनों ठीक है। इस बात को लेके आपको बार बार अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, गलती इस वजह से हुई है। कोमा एक्सेप्टेड है, आपने कोमा लगाया नहीं लगाया ओके है। इसके अलावा जो एक्चुअल मिस्टेक्स है, आपका फोकस वहां होना चाहिए, न कि उन चीजों पे जो सही कंसीडर की जाएगी। हाइफन लगाया नहीं लगाया आपका ठीक है, दोनों ही ओके है।
लेकिन आप उन पे फोकस कर रहे हो जो आपकी गलती नहीं होगी। वो एक सॉफ्टवेयर है, मैं कोई एक कंटेंट ही टाइप करके दे सकता हूँ वहाँ पे, या तो मैं 1 to 12 टाइप कर सकता हूँ, या मैं स्पेलिंग में 12 अल्फाबेटिकली टाइप कर सकता हूँ, आपके दोनों ही ठीक है। तो इसको जस्टिफाई उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कमियां फाइंड आउट करो कि कहाँ एक्चुअल कमियां, ये कमियां नहीं है, कमियां वहाँ है, मिसरीड हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी। अगर कोई नाम है, प्रॉपर नाउन है कि DH अयोध्या, डी पे छोड़ दिया, दोनों ठीक है। प्रॉपर नाउन में इस तरह की मिस्टेक्स चल जाती है कि जहाँ पे, या फिर वोवल आई का ई हो जाता है, ये सब चल। लेकिन अगर एक्चुअल वर्ड है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी तो मिस्टेक्स काउंट की जाएगी, आप वहाँ पे फोकस करोगे। अगर 90% एक्यूरेसी के बाद में आपको अच्छा लग रहा है तो आप लेवल ऑफ कंटेंट को बढ़ा सकते हो दो तरीके से, कंटेंट डिफरेंट टाइप करके या हाई स्पीड टाइप करके, अगर आप 90% एक्यूरेसी पे हो। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 78 75 है तो आप फाइट में अभी भी हो। बस एक कोशिश करो, एक तो आपके वर्ड पूरे आए, दूसरा जो मिस्टेक्स आए उन पर काम कर पाओ। टाइप करने के बाद में ऐसे ही छोड़ देना और दूसरे कंटेंट पे चले जाना, डिक्टेशन लिखना, उसको टाइप करके ऐसे ही छोड़ देना, एनालाइज ना करना, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है इस टाइम पे। आप चाहे 2 कंटेंट टाइप करो या 3 कंटेंट टाइप करो, पर जिनको टाइप करने के बाद में उनको एनालाइज करो, उन गलतियों पे काम करो, और अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं आज जो गलती की है ना वो कल रिपीट नहीं करूंगा। और अगर इस प्रॉमिस के साथ में आप चलते हो तो 7-8 दिन में ही काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है एक्यूरेसी में। अगर 5% का भी एक्यूरेसी का इंप्रूवमेंट कर पाए तो आप वहाँ पे कन्वर्ट कर ले जाएंगे। एग्जाम जो क्राइटेरिया है वो आपके सिलेक्शन के लिए है, तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं स्टेनो के लिए कभी कुछ। एक सीन होता है, एक अनसीन होता है, हमेशा से ये रहा है। सीन कंटेंट वो है जो आपने अभी प्रैक्टिस किया है, अनसीन कंटेंट जो है कि पुराना कंटेंट है, आपने देखा नहीं बहुत दिनों से, वो आपके लिए अनसीन है। यही डेफिनेशन सीन अनसीन की। उस डेफिनेशन को आप ये भी कह सकते हो कि वर्ड फॉर्मेशन, एक पैटर्न पे बोला जाता है, आपको अच्छा लगता है, आप कैलासन को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ इस पैटर्न पे बोला गया है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। उसी पैटर्न को आगे पीछे करके बोल देते हैं, वो आपके लिए आइडेंटिफाई हो जाता है। लेटेस्ट वर्ड वो काफ़ी समय से यूज़ नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, तो इसलिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एक्यूरेसी ही है। जो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट मिलता है 3P के अंदर, वो यही होता है कि आप ना फोकस्ड रहे। मेरा जो रिजल्ट है वो आपके रिजल्ट पे मैटर करता है, आपका सिलेक्शंस ही मेरा रिजल्ट होता है। मैंने जब स्टार्ट किया तो 1 2 या 3 बच्चों से स्टार्ट किया था मैंने, 6 महीने तक मैंने 1 या 2 3 ही बच्चे पढ़ाए होंगे, और मैं 8x8 के रूम से पढ़ाना स्टार्ट किया था प्रोफेशनली, और 2010 से। और आज आप लगभग इतने बच्चे बैठे हो, लेकिन इस बीच में जो रिजल्ट इंप्रूवमेंट आया वो आपकी मेहनत पाता है। आप मेहनत करते हो, उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट मुझे बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे काम नहीं करेंगे, लिखेंगे टाइप करेंगे, एकदम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। देखो स्टेनोग्राफर का माइंड ना बहुत कूल होता है। 12th बेस पे कोई PA बना रहा है, आपको पर्सनल असिस्टेंट बना रहा है, एक IAS PCS अधिकारी के अंडर में बैठ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पैशंस होते हैं। 12th बेस पे कोई भी आदमी, कोई भी मतलब कोई भी जॉब, कोई भी डिपार्टमेंट 2400 4200 4600 पीरियड नहीं देता। 12वीं पास वाले को कौन दे रहा है? और इतना अच्छा पे ग्रेड, इतनी अच्छी प्रोफाइल, मंडे टू फ्राइडे की नौकरी, उसके बावजूद जो है 10 से 5 की अल्टीमेट एनवायरनमेंट के साथ में। वो इसलिए क्योंकि स्टेनो क्या करती है, आपके अंदर पैसेंस जनरेट करती है। आप जब स्टार्टिंग में करते हो क्या करते हो, एक कंटेंट को एक PB स्टार्ट करते हैं, पूरी पूरी लाइन दे देते हैं लिखने के लिए, आप पूरी पूरी लाइन लिख के लाते हो बिना क्वेश्चन किए हुए, गलती हो जाती है सबमिट होकर ठीक करते हो, धीरे धीरे चीजें सीखते हो। आप कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुके होते हो, अपनी एज से भी ज्यादा, ड्यू टू प्रैक्टिस। स्टेनो यही करती है, आपको ना अपर लेवल की पैसेंस लेवल देती है, और इसी वजह से आप सिलेक्ट किए जाते हो। पैनिक हो जाना कि क्या होगा, ये बहुत वो है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में ना बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। मैं अगर थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे चलता हूँ ना, अगर मैं सोचता हूँ और उसको ठीक करता हूँ, तो बिल्कुल वो पेंसिल जो आप यूज करते हो उसकी तरह होती है, उसमें शार्पनेस होती है, पिन होती है प्रॉपरली, और आप ना उससे इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकते हो। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो बिल्कुल उस पेंसिल की तरह होता है जो शॉर्पनर में डाल दी और बार बार छीलते गए, उसका आखिर में निब टूट गया। आप अपने आप पे ना पूरा कॉन्फिडेंस रखो, सोचो जरूर, देखो क्या कमी है क्या नहीं, लेकिन सिर्फ सोचते रहोगे रिजल्ट नहीं आएगा। उस कंटेंट को उठाया, काम किया, आउटलाइन।
एक आउटलाइन का क्वेश्चन था अभी, एक बच्चा उस आउटलाइंस ना, अभी कोई भी आपने ना नई आउटलाइंस पे नहीं जाना है। अगर मैं कोई आउटलाइन बता रहा हूं, जो यूज करता है अच्छी बात है, लेकिन ऑन द स्पॉट एग्जाम सिनेरियो पे ना अपनी पकी हुई आउटलाइन को नहीं छेड़ते। मैं कुछ बनाता हूं और आप कुछ और बनाते हो, तो आप जब बनाते हो जो सही पढ़ पाते हो, आपको उसी आउटलाइन पर रहना होता है। ये टाइम आउटलाइन को चेंज करने का नहीं होता। आउटलाइन चेंज की जाती है जब समय होता है, जब एग्जाम डेट नहीं होती, आपके पास लंबे, आपकी स्पीड 80-100 चल रही है। 80-100 की स्पीड बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। मोस्टली बच्चे लिख लेते हैं 80-100 पे। 120-130 के बाद में आप आउटलाइन को बहुत छोटा कर सकते हो। ऑन द स्पॉट अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा, अभी शॉर्टकट आपसे पढ़े भी नहीं जाएंगे इन 10 दिन के अंदर। तो जो जैसा है उसी आउटलाइन के साथ में उसको, हाँ अगर आप गलत पढ़ रहे हो किसी वर्ड को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको गलत ही पढ़ो। अगर एक वर्ड है आउटलाइन बना रहे हो, आपको मिसरीड हो रहा है आपसे उससे, तो आप उसमें अंतर कर सकते हो। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, तो साइज का अंतर डिफरेंस कर सकते हो आउटलाइन के अंदर, जहां पे आपको मिसरीड हो रहा है, उस तरह की चीजें। कूल माइंड रहो, गलतियों पे काम करते रहो। असाइनमेंट आप ना प्रेजेंट पूरा कर चुके हो। एग्रीकल्चर मैंने पहले भी करवा चुका हूं और दोबारा भी मैं इसको अगर जिसके पास नहीं ले सकता है। केसी रिव्यू के नाम से 12 असाइनमेंट है। पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वही सेट है जो 1 से लेकर 60 तक केसी के अंदर कवर किए गए हैं। आगे पीछे बना के इसको मिक्स करके दिया गया है, ताकि आप ना अपनी आउटलाइन जब लिखते हो तो उस कॉन्फिडेंस को फील करते हो कि मैं बिना देखे भी आउटलाइन बना सकता हूँ। इन असाइनमेंट को देने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है सामने, कि आप जो वर्ड है उनकी जब आउटलाइन बनाओ तो आपको बुक ना खोलनी पड़े। अब तक क्या करते थे, हम स्टेनो को देख के स्टेनो बनाते हैं, या फिर सामने स्टेनो लिखी होती है हम हेल्प लेते हैं। लेकिन जब वो स्टेनो हमारे सामने नहीं होती, उसके बावजूद हम जब आउटलाइन बनाते हैं, तो ये हमें उस तरह का कॉन्फिडेंस देती है कि हम कोई भी वर्ड की आउटलाइन बना सकते हैं। उसके बाद जब उसकी डिक्टेशन लिखते हो तो रियलाइजेशन में आ जाता है कि आपने जो लिखा है आपने उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, सुन के भी लिख सकते हो, और फिर आपने टाइप करना है। तो सबसे जो मेन है, कंटेंट टाइप करने के बाद में उन गलतियों पे काम करना है। अगर आपके 850 वर्ड की डिक्टेशन हो रही है और आपके 830 वर्ड भी आ रहे हैं, तो भी आप फाइट में हो। 800 वर्ड की डिक्टेशन से आपके वर्ड 790 आ रहे हैं, तो भी आप फाइट में हो। आप उन गलतियों पे काम करो, आइडेंटिफाई करो। क्योंकि अगर आपको 5% एरर की बात की जाए तो 40 एरर अलाउ है। वो ओमिशंस भी है, वो मिसरीड भी है, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी है। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपसे ये है कि आप अपनी एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड, टाइपिंग को हर 2-3 बाद में एक सेट एटलीस्ट करते जाओ, ताकि आपकी टाइपिंग का एक्यूरेसी लेवल 99 to 100% के आसपास रहे। और जब भी कंटेंट टाइप करो, बड़े फोकस हो गए कि गलती नहीं करूंगा। टाइम बच जाए उसको रीड आउट करो, और ग्रुप में रीड आउट मत करो। एक दूसरे के साथ बैठ कर रीड आउट करोगे ना, वहां पर एक दूसरे के साथ बैठ कर रीड आउट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक जगह नहीं बैठने वाले हो वहां पे, अपने आप से रीड आउट करो। और रीड आउट में एक टाइम लिमिट रखो, 10 मिनट से ज़्यादा का रीड आउट मत लो। अगर रीड आउट लेना है तो इन दैट केस, मैं कंपलसरी नहीं कर रहा, ये आपकी अपनी हैबिट है, जैसी बनी हुई है उसको ऐसे ही बना के रख सकते हो। ठीक है, डिक्टेशन लिखेंगे। एक लास्ट पॉइंट और बोल देता हूँ। देखो, जब हम लिसनिंग करते हैं, 2 तरह की लिसनिंग करते हैं। एक होती है लिसनिंग रेस्पॉन्ड करने के लिए, और एक लिसनिंग होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिसनिंग करनी चाहिए, अगर आप डिबेट में नहीं हो तो। और अगर डिबेट में हो तो रेस्पॉन्ड के लिए लिसनिंग करते हैं। देखो, start it. Sir, I would like to make a few observations so that the Honorable Minister will make a note about the way in which these institutions are being run. It is a good thing that these institutions have been started. But at the same time,
we are suffering from lack of coordination in regard to our technical education. We have certain institutes like the Polytechnic, etc., under the Scientific Research and Cultural Affairs Ministry, and they are run through the state governments. Then there are the engineering colleges under the universities, and thirdly, sir, trade technical education is imparted by the Central Labor Ministry at the state level. In addition to that, the states have certain arrangements of their own for technical education. I feel that there is no effort at coordination, and that leads to a good deal of confusion. Perhaps if there is effort, there are certain difficulties. I hope the Honorable Minister will tell us about that. I would also like to suggest that even in these four institutions, as for some time the medium of instruction would be English, for emotional integration, an attempt should be made to take a few students from the neighboring region or other regions on a reciprocal basis. Otherwise, these institutes will themselves be developing, as was hinted by the previous speaker, some regional consciousness. There is a great difficulty, sir, with regard to technical personnel for teaching, and I am not aware in what way these institutes will be staffed. Perhaps some foreigners will be brought in, but at the same time, with the arrangements existing at present for taking technical help from different countries, Russia, UK, USA, and Germany, I do not know whether there will be special courses provided in these institutes. For the teaching staff from those different countries, what arrangements there are, one does not know. In the present arrangement for teaching, I should have liked to mention the fifth arrangement for teaching at present provided through the various industrial concerns like Bhilai, Rourkela, etc. All these big concerns have their big technical schools, and they take their students for postgraduate work as also for research work. What will therefore happen with regard to the standard is a question. Sir, we are not at all sure in our country about the correct use of terms. I would, for instance, mention here the word polytechnic. They have one school, and even if there is arrangement for starting another subject, no effort is made, and no sooner they feel they should give guarantee of some sort of technical education without proper inquiries with regard to the possibilities for employment and the various mineral resources, etc., and the basic education that should enable the students to enter the polytechnics, to have the training where it is available. These polytechnics are started. Similarly, there is some confusion about the use of the word university. We have the Roorkee University for one subject, namely engineering. So it seems there is going to be one university for one faculty. We have
one music university also in Madhya Pradesh. We are going to start, I am told, perhaps a university only for agriculture. So, if these institutes are there, which term seems to be really the appropriate word in place of these one faculty universities, I think the Honorable Minister should take the initiative in determining what should be the exact connotation of these terms. Otherwise, one day, as was pointed out, there will be perfect confusion. There comes also the question of the recognition of the degree given by these institutes. Of course, if the training with the special facilities available and the specially recruited staff available is of a high standard, naturally, people would be very anxious to recruit the people who have passed out from there. In the beginning, there will not be any trouble with regard to making use of the graduates turned out from there. But the question of recognition has to be decided on certain principles, and those principles should be laid down and followed from the beginning. Now, I would like also to mention the question about scholarships. It was pointed out that certain scholarships, especially to the children of the working class, should be given. I would like to point out here that there is already provision for that and it is not something new. What I would like to stress is that scholarships should be in larger numbers. The scholarships do not seem to be adequate for the rising standard of living and the cost of living. The scholarships that are given do not meet half the need. There is yet another matter which the Honorable Minister is the proper person to inquire about, and that is the merit scholarships that are available in different states to students for technical subjects or to other students who pass with very high marks are not given by the states if they read outside the state. Mr. Deputy Chairman, Sir, I extend to this resolution my wholehearted support, though I wish he had extended its scope by incorporating within it 2 more services, but then I cannot deal with the subject now. You have assured me that the matter will be taken up on a subsequent occasion. I do not know when that subsequent occasion is likely to occur. Sir, I am grateful to the Home Minister for some kind words he has said about me in regard to my interest in this subject. No doubt, for long I have been urging the necessity of creating more All India services. During the last 5 years or so, ever since that recommendation on the subject was made by the States Reorganization Commission, and during the last 1 year and a half, near about that time, I have been tabling resolutions on the subject twice or thrice, but they could not come up. Of course, as they say, there are higher forces that govern the destiny of things, and so far as Parliament is concerned, it is the government and the undisputed sway of the chair that govern the destiny of resolutions. Obviously, it was so ordained that this resolution should come up only now, and that too as a government sponsored resolution. ये आपको SSC
C and D grade, test 80 YouTube@100 के नाम से मिल जाएगा। इसके वाला नेक्स्ट वाला 80 और फिर सीन कंटेंट आज की डेट में अपलोडेड है। रेडी? Started. Mr. Vice Chairman, I was mentioning the need for trained cooperative personnel. On the one side, we have to train the non-officials in cooperative principles, and on the other side, as a permanent skeleton for running all cooperative institutions, we should have training of cooperative personnel. In this connection, Mr. Vice Chairman, I would like to appreciate the beginning that has been made in training non-officials in cooperation. That has been attempted on a scale which has not been done hitherto, but more than any cooperative principles, the human element, the element of character, the element by which people will stand up to certain cooperative principles rather than their own selfish purposes, is what is wanting in many of our cooperative societies. This cannot be improved by legislation. Nobody can legislate a people into good behavior. This can only be done by constantly training people, telling people the principles we stand for, and appreciating the people who attach themselves to these principles. With regard to the training of cooperative personnel, I do not know about other states, but as far as Tamil Nadu is concerned, there are 3 institutions which give 1 year training in cooperation, 1 year's training for graduates who are considered as senior inspectors, and another for school finals, and above who are called junior inspectors, but a better type of cooperative training institution has arisen which the Ministry of Cooperation should utilize, called the rural institutes. The rural institutes today provide a 3-year course in cooperation. It is one of the unfortunate things in our country that on the one side we train people, and on the other side we do not use trained personnel. We know the number of people we send to foreign countries for training in various types of engineering fields, and when they return, we use them just in the wrong places, and many of them feel frustrated because they are not utilized in the fields for which they were trained. Even today, in the case of the rural institutes, we find that they produce 100 to 150 graduates in cooperation, but they are not being utilized. Every one of them can be employed with benefit to the cooperative movement. There are also 2 institutions, one in Coimbatore and another in
Udaipur, where a 2-year course is given after a 3-year graduate course, and that has been declared by the Ministry of Home Affairs as equivalent to a postgraduate degree in corporation, but these boys are not being utilized. And the funny thing about it is that when the National Cooperative Union advertised for posts, it asked for MAs in agricultural economics, but not for MAs in corporation. This is all the more surprising because the Education Ministry had received a letter from the National Cooperative Union saying that these postgraduates in corporation would be utilized by the National Cooperative Union. In spite of all this, in the advertisement, they called for all accepting postgraduate students in corporation. This only shows the lack of coordination between the Ministry of Corporation and the Ministry of Education. I hope Mr. Vice Chairman, the Ministry of Corporation will see that these people who are trained specifically on a request made by representatives of the Corporation Ministry and the Reserve Bank, and who have undergone a 2-year course after graduation, are properly utilized. Hereafter, at least, I hope that people will choose those who have studied corporation and have undergone a course of training that has been provided by the state at huge expenditure. Now, I come to the next important aspect of corporation, and that is with regard to cooperative financing. Recently, our apex banks have been strengthened. Recently, we also passed legislation here in this house by which amounts up to 1,500 crores would be advanced for cooperative marketing. It has not reached the maximum, but I hope we are taking steps so that cooperative finance will improve. Today, if we take statistics, we will find that financing by the cooperative sector has increased many times. I must accept that, if I remember right, as far as Tamil Nadu is concerned, it has become 5, 6, 7 and even 10 times in certain areas. And while this is good so far as it goes, greater facilities should be provided for further expansion if the movement is to touch the people. If it is merely to be an example of a society here and there, it is another matter. But if our policy is, as it has been proclaimed to be, that we want to expand all our activities through the cooperative sector so that the people will have a say and the people will do it in the best
possible manner for the good of the people, then the finance that we provide is not very sufficient. As I said before, Mr. Vice Chairman, the amount invested in the cooperative sector has been increased considerably in recent years. ये आपको सेकेंड सेट 80 के दाम से मिल जाएगा. सीन कंटेंट लिखेंगे जो आपको विद कोमा नो कोमा दोनों फाइल से बोल देता हूँ मैं आपको. रेडी? ये आपको दोनों मिल जाएगा फाइल में, विद कोमा नो कोमा जैसे चाहो वैसे टाइप कर सकते हो. Start it. Mr. Chairman, the Motor Transport Workers Bill. The Select Committee's report on which we are considering now is one which has received the support of all sections of the House. It is designed to standardize the conditions of service of the workers engaged in this industry and to give them some at least of the important reliefs which workers in general in the country get. This bill is in line with the progressive policy of the government to improve conditions of labor. The opposition members, at least some sections of the opposition who castigate the government for ignoring the interests of labor, should remember that this is one more measure with which they agree, and therefore, while blaming the government, they should keep this in mind. The bill, as it has emerged from the Select Committee, is a great improvement. In this connection, we must remember the expert knowledge which most of the members of the Select Committee brought to bear on the deliberations of the Select Committee. I consider it to be one of the well-constituted committees, in as much as there were many members on this committee who had specialized in labor, both from the opposition sections of both houses as well as from the Congress side. We were fortunate to have a union ex-labor minister on the committee whose knowledge really helped the committee to come to very successful conclusions. The Select Committee was also assisted by persons engaged in this industry, both employers and labor. As many as 20 memoranda were presented, and most of them gave oral evidence before the committee. So much so
there was not a single clause or part of a clause or even a phrase which went without being well considered. That is how the bill has come to be a great improvement on the bill as introduced. I personally think that the deliberations of the committee were so very well conducted that the report has come to weigh more on the side of the employees, and therefore there is likely to be no room for complaint. In this connection, sir, I must also mention that the Deputy Minister of Labour, who was the government's representative present on the committee, was very responsive to all the suggestions made, and there was not the least resistance on his part in admitting whatever was offered as a suggestion and which went to improve the bill. The Select Committee has made some significant changes in the bill. The first change that it made was with regard to clause 1, with regard to the enforcement of the bill. This has been referred to in great detail in the discussion today. The original bill did not fix any date. The date was left open to be prescribed by the central government. It was also open to the state governments to fix different dates. There was a long discussion about this in the Select Committee, and the government side represented their difficulties in the way of enforcement of this bill and why they could not fix a particular date in the bill itself. After much discussion, it was agreed that the date should be definitely fixed because several transport concerns were interested in seeing that the provisions of this bill were put off from coming into force as long as possible. One could understand their position in as much as great responsibility devolved on the transport concerns by virtue of this measure. For instance, establishment of canteens, rest houses, this and that. It should be remembered that the concerns we are dealing with here are not concerns like factories where they are concentrated, where the hours of work and the work itself is confined to a limited area. Here we have big concerns and small concerns, and whereas it should be open to the big concerns to establish rest houses or canteens without much difficulty, it would certainly be a great hardship for small concerns to come out with the same thing. In spite of all that, the Select Committee came to the conclusion that the date should be fixed as 31st December 2011
Now, the Honorable Minister is introducing an amendment to have this date as July 2012. Perhaps he will give his reasons. As far as I can anticipate, it is only the practical difficulties that the state governments will be facing in giving effect to the various provisions of this bill that have influenced him to put off the date by 6 months. If the date is put off by 6 months, there is not going to be any danger resulting from it. It would be better to do that if the government wants time in order to make these arrangements and also to enable the transport concerns to provide themselves with the several things that this bill requires them to do. It should not be a great difficulty at all. Therefore, for my own part, I do not object to the date being extended to July 2012. ये 840 वर्ड है और ये आपको फाइल विद कोमा नो कोमा दोनों तरह से मिल जाएगी। स्पीड इसकी 80 की है और केसी सोर्स है 202 नंबर है, 202 नंबर है।